Today, this is me, Swapnaneel this side, bringing to you some very important previous year questions, PYQs from various government exams, mostly from the NDA and CDS exams especially, okay, from certain topics in biology, okay. As we all know that in both your NDA and CDS paper, biology has a very good weightage because in both the exams you get approximately 30 questions from science. So science is a very, like it's the key to your success in these examinations. And out of science, you have three components: physics, chemistry, and biology. And usually, like more often than not, the division is quite equal between physics, chemistry, and biology. There are approximately some 25 to 30 questions, and approximately 8 to 10 questions come from physics, chemistry, biology each out of the total 25 to 30 that come from science. So one third of your science depends on biology. Okay? And why I say biology is important because there is a lot of information that you need to gather in this subject. I would say it's much more than what you have to do in physics and chemistry because a lot of questions in physics can be solved through that numerical approach. And it is true that half of the questions in physics will be some practical situation based question or a numerical. ठीक है? जो आप आराम से एक formula से derivation से कर सकते हैं. But talking about biology, there is a whole lot of information. It's a mostly, something that you need to go into the textual part. Numerical जैसा कुछ है नहीं इसमें. तो going through this PYQs will actually, अब देखो biology में information इतना ज़्यादा है कि given the fact that you all have to, learn a lot of other subjects like polity, economics, history, environment, geography, physics, chemistry, so many things. तो ये इतना heavy information store करना, it becomes really difficult for you. So if we go through the PYQs, especially for subjects like biology, we will get an idea that what are the topics that we need to especially concentrate on. You know, कि पूरा बायो पढ़ने के चक्कर में इतना ज्यादा पढ़ लिया कि सब मिक्सअप हो गया एंड देन जो हाई एंडिंग टॉपिक्स है जिससे आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं आप उनको ही ओवरलुक करते हो. सो for these kind of subjects like biology, polity, history, geography, where there is a lot of information that you need to put in your mind, you need to remember things. For such subjects, you have to go for PYQs, especially why? Because they'll give you an idea that what are the topics and themes, and what are the ideas basically that the UPSC is repeating in the paper. So you'll get to know that which are the topics you need to concentrate on rather than going in a hodgepodge situation where you have to go through everything, you have to rot learn everything and this and that. That becomes very haphazard for a student. And I'm not a very big fan, of like pointless memorization and telling the students that there is no other option rather than memorizing. There are a lot of ways to shorten your work and do smart work rather than foolish hard work. Okay? So we'll start with the PYQs one by one. The first question says, famous scientist Carolus Linnaeus is associated with which one of the following? And the options are plant classification, binomial nomenclature, identification of plants, and identification of animals. Now see, this person, Carolus Linnaeus, he has written a book. If you have studied biology, if you have studied classification and taxonomy, you will know that this person, Carolus Linnaeus, has written a book called the Systema Naturae. Okay? And in that book, he spoke about something called a binomial nomenclature. Now, what is a binomial nomenclature? See, binomial means two. The word binomial means two, and nomenclature means to name something. किसी चीज का नाम रखना. ठीक है? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब किसी चीज का नाम रखना दो शब्दों के साथ. And this is how you name the different organisms in this universe. Homo sapiens, humans. Homo sapiens, two words. So this is a binomial nomenclature. Mango, Mangifera indica. Tiger, Panthera tigris. Cobra, Naja naja. Lion, Panthera leo. ठीक है? So these are, different animals, different plants, different organisms. Even this thing, your protista that causes malaria, Plasmodium vivax. ठीक है? Then Salmonella typhi. You can see in all these living organisms, they have a thing that their name has two parts, and hence binomial. Binomial means two.
and nomenclature, that is their name. So their name has two parts. And the first part of the name is called the genus. The second part of the name is called the species. For example, in Mangifera indica, that is the name of mango. Mangifera is the genus, indica is the species. So the correct answer for the first question is option B, binomial nomenclature. Coming to the next question. Presence of which of the following compounds causes algal bloom? Now first let us understand what is algal bloom exactly. See, now we all know that algae are marine organisms, ठीक है? They're aquatic organisms. They live in the waters, the oceans, rivers, ठीक है? Now, if algae has to grow, algae needs nutrition. Algae needs nutrition. The primary, now what is algae? Algae is a part of the plant kingdom, right? Algae is the first division that you study in the plant kingdom. Okay, you have different phylums in the animal kingdom and you have different divisions in the plant kingdom. That's the difference, right? So the thing is that कि अब algae is a plant. अब algae को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? It needs nutrition. And being a plant, the most abundant and important nutrition that algae needs is phosphorus and nitrogen. ठीक है? अब कभी-कभी होता क्या है? कभी-कभी होता ये है that ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस निकलते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो इंडस्ट्री से निकल के पानी में जाता है, इन केमिकल्स में फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है. अब देखो हमारे लिए वो हार्मफुल है, बट दीज कंपाउंड्स आर बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो होता क्या है, जो पानी में एल्गी होता है वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड दे स्टार्ट यूजिंग दिस एज अ न्यूट्रिशन टू ग्रो, और एल्गी का क्वांटिटी पॉपुलेशन एकदम फैल जाता है उस वाटर बॉडी. दिस फिनोमिनन इज नोन एज एल्गल ब्लूम. ठीक है, लाइक अ ब्लूम ऑफ एल्गी, एकदम भर जाना. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स. क्योंकि व्हाई फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स? बिकॉज फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन are two very important things for the growth of plants, and algae is a type of division that is found in the plant kingdom. So yes, algal bloom is caused by phosphate and nitrates. Coming to the next question, it says which of the following characteristics does not belong to flowering plants? All right, now see what the speciality about flowering plants. See, the last division that comes in plant kingdom are the phanerogams. Now, what are phanerogams? Phanerogams are those plants which have a seed. They have a seed. ठीक है? Fertilization के बाद, the zygote develops into an embryo. The embryo develops into a seed. But the difference is that in phanerogams, there are certain plants whose seeds are naked. They are not covered. Those phanerogams are known as gymnosperms. And in certain phanerogams, the seeds are properly covered. They are not naked. Okay? So these kind of phanerogams are known as angiosperms. Now, the fun fact here is, in the first type, in gymnosperms, seeds are uncovered. Why? Because the seeds are not covered inside an ovule. An ovule kahan hota hai? Ovule is present inside the ovary. And where is the ovary present? The ovary in a plant is present in the flower. Gymnosperms are non-flowering plants. They do not have a flower, and hence they do not have an ovary. And अगर ओवरी नहीं है तो ओव्यूल भी नहीं होगा, और अगर ओव्यूल ही नहीं होगा then there is no point of a covering for a seed. ठीक है? So what are the things? Which of the following is not a characteristics of flowering plants? Flowering plants are angiosperms. Seeds are naked? No. Flower होने का point ही ये होता है that the seed is covered inside the flower. Seeds naked possible ही नहीं. तो does not belong पूछा था, ऑप्शन ए में ही हमको आंसर मिल गया. Seeds are not naked in flowering plants. Seeds are covered inside the ovary. ठीक है? Correct answer is option A. Coming to the next question, you are observing a non-chlorophyllous eukaryotic organism with chitinous cell wall under a microscope. You shall describe the organism as a what? Now let's come to the point. We have 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae,
and Animalia. ठीक है, 5 kingdoms. Now we all know that the first kingdom, kingdom Monera, contains all the bacteria, and hence each member of kingdom Monera is a prokaryote, meaning they do not have a nuclear membrane or membrane bound organelles. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला है that the organism is eukaryotic. You can see it is said that the organism is eukaryotic. अब अगर यूकैरियोटिक है तो मोनेरा तो नहीं हो सकता, एंड मोनेरा में कौन होता है? बैक्टीरिया होता है. सो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, बैक्टीरिया नॉट पॉसिबल. देन दे सेड इट इज नॉन क्लोरोफिलस. नाउ क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है. नॉन क्लोरोफिलस है, इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट अ प्लांट. ठीक है, बी में एल्गे जो है ऑप्शन में, एल्गे इज अ प्लांट, एल्गे हैज क्लोरोफिल. ठीक है, तो ऑप्शन बी एल्गे इज आल्सो eliminated. Then they said the organism has a chitinous cell wall. Now, which is the kingdom that has chitin in the cell wall? It is fungi. Fungi and plantae and Monera, all of them have cell walls. The cell wall in the case of Monera is made up of peptidoglycans. Okay? In case of fungi, the cell wall is made up of chitin, and in case of plants, we all know that the cell wall is made up of cellulose. So the correct answer for this question is A, fungus. Fungus is non-chlorophyllous, उनका chlorophyll नहीं होता. Their cell wall is made up of chitin, so chitinous cell wall, and they're eukaryotic, means fungi have membrane-bound organelles and a nuclear membrane. Coming to the next question. In the nitrogen cycle, atmospheric nitrogen is fixed by bacteria and converted into ammonia. Ammonia is further converted into other forms of nitrogen. At the end of the cycle, it returns to the atmosphere by the process of what? Now, what is nitrogen cycle? होता ये है, plants need nitrogen for their growth. अब plants can't take nitrogen खुद से. होता क्या है, in the root nodules, मतलब plants के roots में there are certain bacteria. उसका एक example है rhizobium. ठीक है, rhizobium is an example of such bacteria. ये these bacteria are nitrogen fixing bacteria. मतलब ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दे चेंज द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन सच दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट. मतलब नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया ले लेंगे रूट्स में और उसका फॉर्म ऐसे बना देंगे जैसे उसको प्लांट भी यूज कर पाए. ठीक है, अब होता क्या है, जब प्लांट ने यूज कर लिया उसको, प्लांट उसको यूज करने के बाद जो एंड में जो नाइट्रोजन बच जाता है, दैट इज अगेन रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. मतलब सवाल ये है कि ये जो वापस में इसको एटमॉस्फेयर छोड़ा जा रहा है एंड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑप्शन बी नाइट्रिफिकेशन. लास्ट में जो नाइट्रोजन को प्रॉपरली फिर से नाइट्रोजन के फॉर्म में हवा में लौटा दिया जाता है, दैट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statements about classification of plants is correct? Plants classification के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? Halophytes have a well differentiated body design? Absolutely not. Halophytes is the other name of the algae division, and we all know algae. Why are they called halophytes? The reason they are called halophytes is because their body is like the structure of a thallus. वो देख के समझ में नहीं आएगा तुमको कि उसका रूट कहाँ है, उसका लीफ कहाँ है, उसका स्टेम कहाँ है. यू विल नेवर अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स नॉट डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टी. सो ए तो देखा देखी रॉन्ग है. बी में लिखा है फ्यूनेरिया इज अ फंगस. ठीक है, सी में लिखा है टेरिडोफाइट्स आर फेनेरोगैम्स. एब्सोल्युटली नॉट. फेनेरोगैम्स आर दोज plants that produce seeds, but do pteridophytes produce seeds? They don't. ठीक है, and D is vascular system is not found among bryophytes. Now the last statement, look at the last statement. Vascular system मतलब क्या? Vascular system is the transport system जो प्लांट में एक जगह से दूसरे जगह तक खाना और पानी पहुंचाता है. ठीक है, इन डेवलप्ड प्लांट्स वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. बट द फन फैक्ट इज वास्कुलर सिस्टम प्लांट्स के पहले दो डिविजन्स में दिखता ही नहीं.
The first two divisions are algae and bryophytes. Pteridophytes में onwards you can see vascular system. Pteridophytes में थोड़ा बहुत developed vascular system है, but not proper. Then you have gymnosperms, उसमें थोड़ा और developed है, and the proper developed vascular system is found in angiosperms. So bryophytes do not have vascular system. ठीक है? And option D says that vascular system is not found among bryophytes. This is the correct answer. Yes, it is not found. Vascular system pteridophytes onwards मिलता है. Coming to the next question, which one of the following statements is correct about the effects of antibiotics on virus? Now I'll tell you guys something. ठीक है? I'll tell you guys something. ये जो antibiotics होते हैं ना, the word biotic means living and anti means against living. ठीक है? तो antibiotic is something जो किसी जिंदा चीज को मार सकता है. कैसे मारेगा? बैक्टीरिया पे काम करता है. कैसे मारता है? बैक्टीरिया इज अ लिविंग थिंग. एंड हाउ डज एन एंटीबायोटिक किल अ बैक्टीरिया? वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को, सेल को जाके बर्बाद कर देता है. बट वायरस ऑन द अदर हैंड, वायरस इज एन एसेलुलर एंटिटी, मीनिंग वायरस डज नॉट इवन हैव अ सेल. वायरस का तो सेल है ही नहीं. तो जिसका सेल ही नहीं है वो तो प्रॉपर्ली जिंदा ही नहीं हुआ, और जो जिंदा ही नहीं है प्रॉपर्ली उस पर एंटीबायोटिक कैसे काम कर सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे पूछा है कि एंटीबायोटिक्स का वायरस पे असर होने का क्या स्टेटमेंट करेक्ट? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, which says viruses do not possess metabolic pathways on which antibiotics can function, whereas bacteria have such pathways. It is correct. The thing is, antibiotics काम कैसे करते हैं? हर लिविंग बीइंग के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है जिससे कि वो जिंदा है. कल को वो एक्टिविटीज रुक गई, वो बंदा मर जाएगा. सेम थिंग गोज फॉर दीज बैक्टीरिया. इनके सेल्स में कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म होता रहता है. अभी एंटीबायोटिक्स जैसे ही वो मेटाबॉलिक पाथवेज को रोक देती है, बैक्टीरिया मर जाता है. बट वायरस तो एक एसेलुलर एंटिटी है, इसका सेल ही नहीं है बॉडी में, तो इसमें मेटाबॉलिज्म होने का भी सवाल नहीं उठता. एंड एज अ रिजल्ट एंटीबायोटिक्स को इस पर काम करने का कोई डायरेक्ट रास्ता मिलता नहीं है. तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स हैविंग नेकेड सीड्स क्लासिफाइड? इतना कंफ्यूजन में पड़ो ही मत. सीड्स किनके पास होते हैं? फेनेरोगैम्स हैव सीड्स. And what are the two types? Gymnosperm and angiosperm. Gymnosperms have naked seeds, angiosperms have covered seeds. Seed है मतलब it is either A और D. ठीक है? B भी हो सकता है. Monocotyledons are a part of angiosperms. ठीक है? C तो नहीं है. Pteridophytes do not have seeds. तो pteridophytes पहले eliminate हो गए. But उसके साथ साथ क्या बोला है? Naked seed बोला है. Angiosperms have covered seeds. Not possible. And monocots and dicots, they are parts or types of angiosperms only. तो monocotyledon भी possible नहीं. Correct answer बचता है D, gymnosperm. Why? Because gymnosperms have naked and uncovered seeds. Coming to the next question, which one of the following groups is called amphibians of plant kingdom? What are amphibians in the animal world? Amphibians are those animals which can live on both land and water. ठीक है? तो प्लांट किंगडम में भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, जो जमीन में भी रह सकते हैं. सो देयर इज वन डिवीजन ऑफ प्लांट्स दैट कैन स्टे इन बोथ वाटर एंड लैंड एंड हेंस दे आर कॉल्ड द एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. द आंसर फॉर दिस इज ब्रायोफाइट्स. एल्गे जो पहला डिवीजन होता है दैट इज कंप्लीटली मराइन और एक्वाटिक. ठीक है? ब्रायोफाइट्स आर एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. दे कैन स्टे बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. टेरिडोफाइट्स onwards, the plants are proper terrestrial, मतलब जमीन पे रहने वाले. Answer for this question is option A. The next question, which of the following is an aquatic fern? Aquatic fern. Fern क्या होता है? If you see cricket, if you see the logo of the New Zealand cricket team, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लोगो में जो एक ऐसा ट्रायंगल शेप का एक लीफ बना रहता है, दैट लीफ इज कॉल्ड अ फर्न. ठीक है? ऐसा कौन सा फर्न है जो एक्वाटिक है, पानी के नीचे मिलता है? तो करेक्ट आंसर इज ए, एडियंटम. ठीक है? एडियंटम एक टाइप का एक्वाटिक फर्न होता है जो पानी के नीचे मिलता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकेन क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर डैश एंड डैश लिव टुगेदर. लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. व्हाट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? एक ऐसा रिलेशनशिप
in which two living organisms stay together and both of them benefit from each other. तो लाइकन में क्या होता है, लाइकन में एल्गी और फंजाई होते हैं. फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना खाना नहीं बना सकता, और एल्गी जो है वो अपना खाना बना सकता है, बट उसको प्रोटेक्शन चाहिए. उसका जो बॉडी का शेप और वो है वो काफी डेलिकेट है. तो द फायदा दैट द बेनिफिट दैट हैपेंस हियर इज दैट एल्गी हैज क्लोरोफिल एंड विल मेक द फूड, और उस फूड से थोड़ा सा खाना फंजाई भी खा लेगा, और एल्गी को प्रोटेक्शन देगा, कवरिंग देगा फंजाई. ठीक है, तो दोनों को दोनों से फायदा हो रहा है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एल्गे एंड अ फंगस. एल्गी और फंगस मिलकर लाइकेन बनाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हॉर्सेस बिलोंग टू द क्लास ऑफ व्हाट? सी हॉर्सेस बिलोंग टू द पाइसीस क्लास. ठीक है, ऑफ वर्टिब्रेट्स फाइलम. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फिशेस. फिशेस के क्लास को उसका दूसरा नाम है पाइसीस. ठीक है, तो सी हॉर्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ऑप्शन ए, फिशेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का मीनिंग क्या होता है? सी, एनी ऑर्गेनिज्म which has less than 4 chambers in the heart. उन ऑर्गेनिजम्स को अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते. Why? Because they don't have 4 chambers in their heart and they do not have double circulation. Because of that, ये बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन नहीं कर पाते ढंग से, and hence they are called cold-blooded. But what are warm-blooded animals? Like animals like humans, mammals, or birds. We have 4 chambers in our heart. We have a double circulation, and because of that, हम अपना body temperature maintain कर सकते हैं properly in different conditions, and hence we are called warm-blooded. Less than 4 chambers में fishes आते हैं, उनका 2 chamber का heart होता है. Amphibians and reptiles आते हैं, उनका 3-3 chamber का heart होता है. Only crocodile is like a exception in amphibians, that he has, the crocodiles, they have a 4 chambered heart. ठीक है, तो fish not possible. Sorry, fish cold blooded है, 2 chambers. Frog again cold blooded है, 3 chambers. Liver is also, sorry, lizard is also cold blooded. Lizard also has 3 chambers in the heart. So the correct answer is option D, all of these. Which one of the following characteristics is common among parrot, platypus and kangaroo? ठीक है, इनमें कॉमन क्या है? What is common? The common thing between them is a functional postnatal tail. Why? Because तुम platypus, kangaroo या parrot को देखोगे, सबके पीछे ऐसा एक टेल जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी. The next question is, which of the following is not a bird? Option A, bat. Bat is not a bird. Bat is a mammal. All the rest, emu, ostrich, kiwi, they are all birds. But bat is a mammal. It is not. Bat can fly, but it is not a bird. It is a mammal. The next question is, which one of the following groups of animals maintains constant body temperature in changing environmental conditions? Again, I just taught you this a while ago. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रख पाने का मतलब क्या है? वो वार्म ब्लडेड है, उसके हार्ट में 4 चेम्बर्स. नाउ फिशेस हैव 2 चेम्बर्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये मेंटेन नहीं कर सकते. रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव 3 चेम्बर्स इन देयर हार्ट, अगेन ये मेंटेन नहीं कर पाते, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. बट birds have 4 chambers in their heart, and hence birds are warm blooded, और ये अपना बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाते. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन is option A, birds. Now the last question. ठीक है, among the following animals, choose the one having 3 pairs of legs. Choose the one having 3 pairs of legs. This is more like a factual question, and I will leave it to you guys to answer me the question in the comments below. ठीक है, I hope ये वीडियो हेल्पफुल था आप लोगों के लिए. You got to know what kind of questions might show up from these topics that we discussed. These are mostly questions from the classification unit, the biological classification unit of biology. ठीक है, एक आइडिया आप लोगों को लग ही गया होगा
कि कैसा क्या टॉपिक्स आता है, क्या थीम्स रिपीट होती है एग्जामिनेशन में. आई होप इट वाज एन हेल्पफुल वीडियो, एंड अगेन माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, live a disciplined life, you know, they have fun here and there, but please be particular and sincere in your time and studies and punctuality. ठीक है, exams are near, do well. We'll see you again in another video very soon. Until then, take care, goodbye, Jai Hind.